क्या आपको पता है कि जब आप बाली जाओ तो यू कैन ऑल्सो विजिट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड्स दैट इज जस्ट अ फेरी अवे फ्रॉम बाली. Oh, also, this one happens to be the biggest party island of Bali. Welcome to Gili Trawangan, Indonesia. बाली से गिली ट्रवांगन जाने के लिए यू नीड टू बोर्ड अ फेरी सिंस इट्स एन आइलैंड और बाली से थोड़ा ही दूर है. बाली में 2 हार्बर्स है टू कैच अ फेरी, सनूर एंड पदांगबाई, और आई वेंट टू द पदांगबाई हार्बर टू गेट माई फेरी फॉर गिली ट्रवांगन. इट टुक मी एन आवर टू ड्राइव फ्रॉम बाली टू दिस हार्बर, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर छोड़ रही हूँ ऑफ द गाय हु नॉट जस्ट अरेंज द पिकअप फॉर मी फ्रॉम माई होटल टिल द हार्बर बट ऑल्सो गॉट मी द फेरी टिकट फॉर अ वेरी वेरी लो रेट. हार्बर पर आपको फेरी टिकट लेनी है एंड देन हेड टू पे अनदर ₹55 फॉर हार्बर टैक्स, आफ्टर विच यू कैन बोर्ड योर फेरी. आपके बैग्स वो खुद ही फेरी में लोड कर देंगे. That's the one, right? The ferry from Padangbai to Gili Trawangan takes about an hour and a half, और अगर आपको सी सिकनेस है तो बेस्ट टू टेक अ पिल राइट बिफोर यू बोर्ड. मैं पहुंच चुकी हूँ आइलैंड पे फाइनली, गिली ट्रवांगन पे. एंड जैसे कि मैंने दिखाया कि वहाँ पे टैक्स भरना था, आइलैंड टैक्स 10,000 व्हेन यू बोर्ड. तो यहाँ उतरने के बाद भी आइलैंड टैक्स भरने बोला, विच इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज. आई ट्राई टेलिंग देम कि एक ही आइलैंड है तो टैक्स तो एक बार भरेंगे, बट दे सेड नो, दिस इज लाइक एन एग्जिट टैक्स. So I just paid that another 10,000 over here, and when I say 10,000, this is the local currency in IDR. So yeah, that's that. Okay, now the idea behind the island is कि यहाँ पे कोई भी vehicles नहीं चलती, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ नहीं होती, कोई भी किसी भी तरह की टैक्सीज नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे सिर्फ हॉर्स कार्ट चलते हैं, हॉर्सेस चलते हैं और सिर्फ साइकिल्स चलते हैं. So that's the only way of getting around the island, which is why it's a completely pollution free island. तो आप जब एक बार यहाँ पे पहुँच जाओगे यहाँ के हार्बर में, गिली ट्रवांगन में, तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा एक हॉर्स कार्ट जो यहाँ पे पूरे लाइन में लगे रहते हैं, या तो फिर ऐसे आप साइकिलिंग कर सकते हो साइकिल हायर करके. बट ऑब्वियसली अब जब आओगे आई थिंक आप लगेज के साथ ही आओगे मोस्टली मेरी तरह. सो गेटिंग अ साइकिल एट दिस पॉइंट डज नॉट मेक सेंस, बट यू कैन टेक इट लेटर लाइक टू रोम द आइलैंड. बट फिलहाल के लिए आई ऑल्सो नीड टू गेट अ हॉर्स कार्ट, और मे बी आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल माई होटल एंड चेक इफ दे कैन कम एंड पिक मी अप फ्रॉम हियर. सो लेट मी सी व्हाट कैन बी डन. Well, हॉर्स कार तो नहीं, लेकिन मुझे मिल गया एक लोकल who offered to drive me to my hotel at a much cheaper rate on his moped, and so I hopped on. I was staying at the Mad Monkey Hostel, जहां आपको अलग टाइप के accommodation options मिलेंगे. Mine was this dorm that I was sharing with 2 other women. The dorms are very clean, has AC, charging ports for every bed, and it's a nice place to stay. या तो आप इस टीपी में भी रह सकते हो, which are these A-shaped cottages. और क्योंकि ये एक हॉस्टल है, यहाँ there is a common bath and washing area that everyone staying here uses, and it's quite clean to be honest. And the advantage of staying here is that you get to interact with so many different people, especially if you're a solo traveler like me. और यहाँ मैड मंकी पे हर दिन कुछ ना कुछ होता है, like you can see on this notice board, so it's a great place to come and stay at. यहाँ there's an in-house bar, a restaurant area, and also a pool area that is quite the highlight if you're staying here. Well, I had a tiring morning, so I slept off for a while, and शाम को I just head out to take a walk across the island. मैं इस आइलैंड पे पहले भी आ चुकी हूँ a few years back, and I remembered a place I wanted to spend the evening at, तो मैं बस वहीं चली गई. As I walked, I was noticing कि शाम में यहाँ काफी shacks open होते हैं, little shops and even cafes. It's not 100% safe to walk very late into the nights on the island, simply because यहाँ ज़्यादा street lights वगैरह नहीं है. But up until about 8ish PM, you can.
तो मैं चलते चलते पहुंच गई एस्टन रिसोर्ट में, जहां मैं पिछली बार रही थी. एंड गेस व्हाट, whether or not you're staying here, every evening at 7 p.m. and at 9 p.m. you can enjoy an open cinema by the beach, totally free of cost. डेली मूवीज का लिस्ट यहाँ बाहर बोर्ड पे लगा होता है, and you can just go, grab a bean bag and watch a movie. Of course, there's also popcorn, beers, barbecues that you can indulge in, and of course, that is to be paid for. तो मैंने एक कॉफी ली, एक पिज्जा मंगवाया, and I spent some time just chilling here watching a movie. Good morning from my Buddha bowl and me. The island life is really the best life, and every time I'm at an island, मुझे लगता है I just belong there. So a quick breakfast later, मैं निकल गई to walk across the island to explore and see what's around. Gili Trawangan being an island offers some great water sports, so you can learn surfing या फिर scuba diving, और आप snorkeling भी कर सकते हो, and really just make the most out of the beaches here. Oh, and when I got back to my hostel, there was a bubble pool party happening here. I didn't want to get in as yet, तो मैं बाहर रह कर ही enjoy कर रही थी. तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा था, I had met a friend in Ubud, और आज वो गिली ट्रवांगन आई है, तो I just packed my bags and left to a hotel to just chill with her, क्योंकि today was my last day in Gili Island. So here's Jagriti, and we meet again after Ubud. Yeah. है ना, after Ubud. So I've come to her place, this amazing place जहाँ पे वो रह रही है, क्योंकि this is closer to the harbour and we just wanted to spend time together. And we were on opposite ends of the island. Yeah, this is more close to the harbour, and this is a B&B. And like really less cost to get a proper room. She's going to show you the room. Yeah. So here's our room. We quickly checked in and spent some time by the beach all through the evening. चलते चलते इस बीच पे आए हैं. इट्स सो ब्यूटीफुल आउट हियर बिकॉज इट्स जस्ट सनसेट टाइम. सनसेट आज बहुत क्लियरली नहीं हो रहा क्योंकि क्लाउडेड है, क्लाउडी है, बट अदरवाइज दिस प्लेस इज सो गॉर्जियस. सुबह होते ही it was time for me to leave the beautiful Gili Island and head to yet another unique and quirky city of Bali, Canggu. I was booked at the Surf Lodge Canggu, which is a homestay, because I wanted to experience a variety of stays in Bali. तो गिली में हॉस्टल के बाद this one was more private of course, और बहुत ही ज्यादा homely. तो ये मेरा रूम है, quite clean, well maintained, and there's also a common pool area to use, also a seating and TV area that's common for all guests. मैंने अपने लिए quickly कॉफी बनाई and then I just decided to stay in the room until evening, क्योंकि बाहर बहुत धूप थी and I wanted to avoid the overhead sun. Just take in all of this beautiful trip, relax, since this was going to be my last city in Bali. In the evening though, I went to a place where they had a salsa dancing session happening and it was so much fun. बाली की यही खासियत है, आपको किसी जगह पे हर शाम को कुछ न कुछ होते हुए जरूर मिलेगा. By the way, क्या मैंने बताया इस homestay में breakfast is inclusive with the price you pay? I just love breakfast inclusive stays honestly, because that way you can just eat there and then head out. If you are a fitness freak, if you're a health freak, a regular gymmer,
then you know how it is to make your protein shakes, right? But what if I told you there is an entire cafe out here in Canggu dedicated just to making protein shakes, and not your regular protein shakes, the best ones that you can think of. They have every kind of protein, every kind of creatine that you can think of in this cafe. Let me take you inside. So the concept behind this cafe was to cater to fitness freaks who don't have the time to make a delicious protein shake every day, or even for people who wish to have a healthy protein shake but cannot think of enough variations to make it interesting. यहाँ शेल्फ पे ये रहे ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाउडर्स that you can choose from basis what suits you and what is your purpose, and here are the shakes that they usually do. ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने तो कभी पहले नहीं देखा. Did you know that every single lane of Canggu has a tattoo parlor, and that getting a tattoo here is so common as getting a haircut? I got to know that when tourists usually come here to Bali, they come seeking peace, answers, or maybe just some time away from the hustle. और ऐसे mind frame में tattoo करवाना is like finding nirvana or finding a way to express your feelings through art. इनका ये मानना है कि ज़्यादातर यहाँ tourists tattoo बनवाते हैं compared to the locals. Getting a tattoo here in Canggu can cost you anywhere between rupees 800 all the way up to rupees 2 lakhs. Slightly less expensive than in India though, I would say. But of course, other than the unique cafes and tattoo culture, just like any other city of Bali, Canggu too is high on shopping scene, and I just found the place. So are you ready to go into one of the hippiest and the most amazing hippie markets of Canggu? Let's go. अंदर जाते ही आपको तरह तरह के कपड़े, boho jewelry और souvenirs मिलेंगे. It's one of the cheapest markets, and to give you a fair idea of prices, you can find clothes here from rupees 400 onwards, hats and bags around rupees 500, bikinis around rupees 500, and junk jewelry just from rupees 100. Oh, and on that note, I'm going to go into some intense shopping while I leave you guys with this video and the Bali series. Don't forget to like the video, share it with your friends. I'll see you soon from yet another destination. Until then, goodbye.